One, I'm Avinash. We will do the extra questions of chapter real numbers, and please watch part 1 of real numbers before coming to this video. Okay, so today we'll do all the important board numericals that can come in the exam. To start with them. Now the first question is, in a school, the duration of a period in junior section is 40 minutes. The junior section has a period of 40 minutes, and in senior section it is 1 hour, and the seniors have a 1 hour class, means they have a 60-minute class. If the first bell for each section ring at 9 a.m. Now both bells ring at 9 a.m. Okay, then when will the two bells ring together again? तो क्वेश्चन है कि वो दोनों बेल दोबारा किस टाइम पे रिंग करेंगे. तो एक चीज, जब भी क्वेश्चन में यू फाइंड टुगेदर, इट्स अ हिंट दैट यू हैव टू फाइंड द एलसीएम. जहां भी मीट लिखा हो या टुगेदर लिखा हो, उस केस में आपको एलसीएम निकालना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो I have to find the LCM of 40 and 60 first. Two, 5 and 5, 1. Okay, and 60. Now 60 is so the prime factorization of 40 comes out to be 2 power 3 into 5, and 60 is coming out to be 2 power 2 into 3 into 5. So the LCM becomes the individual's highest power product. So it is 2 cube into 3 into 5. So this is coming out to be 8 into 3 into 5, which is coming out to be 120. So these two bell will ring after 120 minutes. ये 120 minutes के बाद ring होंगे. Now what is 120 minutes? It means 2 hours. So the bell will ring after 2 hours. So 9 a.m. plus 2 hours, it will ring again at 11 a.m. वो दोनों बेल्स 11 a.m. पे दोबारा रिंग करेंगे. Please note it down. Now question number 2 is, the LCM of two numbers is 14 times the SCF. जो LCM है वो SCF का 14 times है. The sum of LCM and SCF is 600. The sum of LCM and SCF is 600. If one of the numbers is 280, so let the numbers be A and B. If the first number is 280, then find the second number. तो उस केस में दिया हुआ है कि जो हमारा LCM है
वो HCF के 14 टाइम्स है, और जो LCM और HCF का सम है वो 600 है, एंड द फर्स्ट नंबर इज 280, तो फिर सेकंड नंबर कितना होगा? ऑलराइट, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन इज LCM plus SCF is equal to 600, but what is LCM? It is 14 SCF, so this becomes 14 SCF plus SCF is equal to 600, so this becomes 15 SCF is equal to 600, so the value of SCF is coming out to be 40. इसका SCF 40 आ गया, so let us find the LCM now. Now what is LCM? LCM was 14 times SCF, so the LCM becomes 14 into 40, which is 560. तो उसका LCM 560 आ गया. Okay, now there is a formula which states that the product of LCM and SCF is equals to product of the two numbers. So the LCM is 560, the SCF is 40, the first number is 280, I need to find the second number. Okay, from this equation B comes out to be 560 into 40 upon 280. So on solving it I get 80. My second number is, the value of B is coming out to be 80. A very very important question, please note it down. And please like and subscribe my channel. Next question is, check whether 14 power n can end with 0. Check whether 14 power n can end with 0. हमको चेक करना है कि क्या 14 का जो पावर है वो 0 से एंड, वो 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा. तो हमने किया था पार्ट 1 में कि किसी का भी पावर 0 पे एंड तब होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी हो और 5 भी हो. तो 14 रेस्ट पावर n 0 से एंड तब होगा जब इसके फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए. सो लेट अस चेक कैसा है क्या. So after doing the prime solution, I get 2, 7, 7, 1. Here 5 is missing, so I will write no, it will never end with 0 as it does not have 2 and 5 as its factor. Since उसके 2 और 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा. Note it down. Moving forward, the fourth question is, A, B, and C start cycling around a circular
park in the same direction at the same time. The circumference of the path is 1980 meter. Now ABC, तीन लोग ABC साइकिलिंग कर रहे हैं और ये एक सर्कुलर पार्क के अराउंड साइकिलिंग कर रहे हैं जिसका सर्कमफ्रेंस 1980 मीटर गिवन है. Okay. If the speed of A is 330 meter per minute, the speed of A is 330 meter per minute. Okay. And the speed of B is 198 meter per minute. It is 198 meter per minute speed of B, and speed of C is 220 meter per minute. ओके ये तीनों का स्पीड है और ये उस पाथ का डिस्टेंस है, लेंथ है उस पाथ का. एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट. यानी कि वो किस टाइम के बाद वापस से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था. आफ्टर हाउ मच टाइम. तो अगर टुगेदर लिखा होगा तो मैं एलसीएम निकालूंगा, बट एलसीएम किसका निकालूंगा? टाइम का निकालूंगा. ये तीनों स्पीड है, सो फर्स्ट हमको टाइम निकालना है. नाउ व्हाट इज टाइम? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम टेकन बाय ए इज 1980 upon 330, 6 minutes. Now speed of B, time of B is 1980 जो उसका स्पीड है upon 198 उसका टाइम जो उसका स्पीड है. So this comes out to be 10 minutes. Now time of C is 1980 upon 220 which is 9 minutes. यानी कि A takes 6 minutes, B takes 10 minutes and C takes 9 minutes to cover the park. Alright. तो ये तीनों मिलेंगे after their LCM is find out. So on finding the LCM we get LCM of 6, 9 and 10. जो इनका LCM आ जाएगा उस टाइम के बाद ये तीनों मीट करेंगे. So it is 2 3s are 2 5s are 3 1. So the LCM is going to be LCM is equals to 2 into 3 square into 5. So they will meet again after 90 minutes. Okay, note it down. Moving forward. Now question number 5 is the SCF of 408 and 1032. SCF of 408 and 1032 is expressible in the form 1032m. इन दोनों का SCF इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस हो सकता है
if the HCF of 408 and 1032 can be expressed in the form of 1032 m minus 2040, then question is find the value of m. तो फिर m केवल कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए first we have to find the HCF of 408 and 1032. Okay, so the HCF, let us find out. Okay, okay, so the factor of 408 is coming out to be 2 power 3 into 3 into 17, and 1032 is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It is 2 power 10. So we know that what is HCF? HCF is the lowest exponent in the prime factorization. So this is the lowest common. So this is a common term. So the HCF is common to be 2 power 3, which is 8. HCF क्या होता है? किसी भी prime factorization में उसका lowest common exponent. So the HCF is 8. Okay. Now, which means that one zero three two m minus 2040 is equals to 8. Okay. So 1032 m is equals to 2040 plus 8 is equals to 2048 equals 1032 m. So the value of m becomes 2048 upon 1032. Okay, so on solving it, after solving it, you'll get the answer. Okay, please solve it. Next question. If the product of two co-prime numbers is 217, okay, product of two co-prime numbers is 217, then find the LCM. तो उन दोनों का LCM कितना आ जाएगा? अगर दो को-प्राइम टर्म्स का प्रोडक्ट 217 है तो उनका LCM कितना होना चाहिए? नाउ वी नो दैट अगर दो नंबर को-प्राइम होते हैं, व्हाट इज को-प्राइम? जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है उनको बोलते हैं को-प्राइम नंबर. तो जो इनका प्रोडक्ट होता है वही इनका LCM भी होता है. आंसर में आ जाएगा. सो द LCM ऑफ these two number is
217. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज डू इट, लाइक इट, शेयर इट. नेक्स्ट इज प्रूफ √3 plus √5 as an irrational number. Disprove √3 plus √5 as an irrational number. तो इसमें डबल रूट है, दोनों में रूट है. तो ये हम कैसे करते हैं? ये सॉल्व होता था इन दोनों का स्क्वायर करके, राइट. फर्स्ट स्टेप, लेट √3 plus √5 be a रैशनल नंबर. हमने अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है. तो अगर ये रैशनल है तो ये रैशनल के केस को, फिर कंडीशन को फुलफिल करना करेगा. सो विच इम्प्लाइज √3 plus √5 is equals to a upon b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0. ये रैशनल की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा. फिर इसके बाद क्या करते थे? ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन squaring both sides, we get √3 plus √5 square is equals to a square upon b square. Okay, please note it down. So हमारे पास आ गया था √3 plus √5 square is equals to a square upon b square. Okay, so it is a square plus b square plus 2ab. So it is a square plus b square plus 2ab is equals to a square upon b square. So this becomes 8 plus 2√15 is equals to a square upon b square. So on rearranging it, we get a square upon b square minus 8. This becomes a square minus 8b square upon b square is equals to 2√15. So from here, √15 is equals to a square minus 8b square upon 2b square, right? यहाँ से the LHS is irrational and the RHS is rational. यानी कि इस इक्वेशन से ये आ रहा है कि जो नंबर इरेशनल है वो रैशनल के इक्वल होता है. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. सो आवर assumption is wrong. So we will write, but this is not possible. Our assumption is wrong. Therefore, √3 plus √5 is an irrational number. Okay, please note it down.
Moving forward, eighth question is, if the SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then what's the value of m? अगर 65 और 117 का जो SCF है वो इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर इन दोनों का जो वैल्यू है, जो उसका वैल्यू है m का, वो कितना है? तो उसके लिए फर्स्ट फाइंड द SCF. So we get 5, 13, 13, 1, 3, 39. Okay, so 65 is 5 and 13, and 117 is 3 square into 13. What is SCF? The product of lowest component, the lowest exponent. So the SCF is 13. Okay, so this equation becomes 65m minus 117 is equal to 13. So 65m is equal to 13 plus 117, which is 130 is 65m. So the value of m will be 130 upon 65, which is 2. So the value of m is 2. Note it down. Moving forward, the question is, if two positive integers a and b are written as a is equals to x cube, a is equals to x cube y square, and b is equals to x into y cube, where x and y are prime numbers, then find the SCF of a and b. Also find the LCM of a and b. A very, very important question. So what is SCF? The product of lowest exponent. तो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, x आ गया, यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ y क्यूब है, तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा. So the SCF of a and b will be x into y square. Now what is LCM? The highest, the product of highest exponent. So the LCM, x cube and x, highest is x cube, and it is y square and y cube. So this becomes y cube. So the LCM is x cube y cube, and the SCF is xy square. Okay, a very, very important question. Please note it down. Moving forward, it is, Aman has two vessels
which contains 720 ml and 405 ml of milk. Okay, then it is milk from these containers is poured into the glasses of equal capacity. मतलब जो यहाँ मिल्क था उसको ग्लासेस में डाल दिया गया. Okay, of equal capacity. Now find the minimum number of glasses that can be filled. यानी कि जो A है, कंटेनर A के पास इतना मिल्क है और कंटेनर B के पास इतना मिल्क है. ना क्वेश्चन है कि जो A है वो P को फिल करेगा और जो B है वो Q को फिल करेगा और दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो फिर कितने ग्लासेस लगेंगे इनको फिल करने के लिए. तो फिर पहले हमको ये निकालना है कि आखिर P और Q में कितना मिल्क कंटेन होगा. उसके लिए we have to find the SCF of 720 and 405. So let us find out the SCF of 720 and 405. 2 360, 2 180, 290, 245, 315, 35 and 51. 405 becomes 581, 327, okay. So this 720 is 1 2 3 4, 2 power 4 into square of 3 into 5, and this 405 is 5 into 3 power 4. SF क्या होता है? Product of the lowest exponent. Okay, so the SF becomes, कॉमन क्या है इसमें? कॉमन इसमें 3 है and 5 है. So for 3 it is 3 square into 5, 9 into 5, 45. यानी कि इन दोनों ग्लासेस में 45 ml मिल्क हम फिल कर सकते हैं. तो फिर क्वेश्चन था कि फिर कितनी ग्लासेस मिनिमम यूज होंगे, तो फिर जहां मिनिमम लिखा होगा वहां हम एलसीएम निकालते हैं. तो ईच ग्लास हैज 45 ml ऑफ मिल्क. नाउ हाउ मेनी ग्लासेस आर रिक्वायर्ड? उसके लिए जस्ट डिवाइड these two by their required SCF to get the answer quickly. So it is 720 upon 45 plus 405 upon 45. Okay. So this becomes 5 9 and 144, 16, and this is 9. So 25 glasses minimum are required to serve everyone. Okay, please note it down. These are all previous year questions. Now question number 10 is, check whether
7 multiply 13 multiply 6 multiply 8 plus 7 is a composite number or not? Check whether 7 multiply 13 multiply 6 multiply 8 plus 7 is a composite number or not. तो हम जानते हैं कि वो नंबर composite तब होगा जब उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएं, राइट? तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, सो इट इज 7 इंटू 13 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 7. तो यहां से 7 कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लो. सो दिस इज 7 इंटू 13 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 1. So it is 7 into 104 into 6 plus 1. So this becomes 7 into 624 plus 1. So it is 7 into 625. Now this 625 is what? This is 25 into 25. So this can be written as 7 into 5 into 5 into 25 into 1. So I can see that it has more than 2 factors. So this expression is a composite number. Okay, so this was our main questions of class 10 real numbers. Okay, hope you like it. Please like and subscribe for more videos. Thank you so much.